Assalamu alaikum, dear students. Hope you are good. Today we are going to discuss an important topic of IGCSE O levels, transport in flowering plants. So first of all, we would have to discuss that what are flowering plants? Flowering plants are those plants that have flowers, and through flowers they produce seed that is used to produce a new plant. So flowering plants are those plants that reproduce through by producing flowers, and flowers ultimately produce seed, and then from seed a new plant is grown. So this is a general structure of a flowering plant. We can see that it has the part of the soil, the part of the plant that is under the soil, the part of the plant that is under the soil, it is called as root system, and the part of the plant that is above the soil, that is called as shoot. And shoot consists of leaf, and then fruit, and then flowers, etc., and many things, so stem, etc. So this is a general structure of a flowering plant. Now, how transport in flowering plants occur? Like for example, if we humans take our example, that when we consume food, so the food is consumed into the stomach, but glucose, carbohydrates, fats, etc., from the stomach they are transported to all the parts of the body: brain, heart, kidney, liver, through bloodstream and blood vessels like arteries, veins, capillaries, etc. It means that in every living organism there are channels and there are pathways that are used to transport substances all over the body. Same is the case in the flowering plants. Flowering plants, they have basically two main transporting substances that are called as vascular bundles. Xylem, the first one is xylem, and the second one is phloem. Xylem is used for the transportation of water from soil to all the parts of the plants. And phloem is used to transport sugar and amino acids from leaves to other parts of the plants. So xylem and phloem are the main structures that are controlling the transport system in plants. This diagram is very important as compared to syllabus. So first of all, we have to see xylem and phloem vascular bundles in stem. Okay, in stem and root, one thing is common. The thing that is common is that on the inner side, we can see that on the inner side, this all in the stem there is xylem, and in the root, in the inner side, this is xylem. And on the outer side, if you look at the outer side, phloem is on the outer side. You can see that phloem is on the outer side in stem, and here phloem is in the outer side in the roots also. However, in leaf, the slight difference is that the xylem is on the upper side and phloem is on the lower side. So here in stem and roots, xylem is on the inner side and phloem is on the outer side. Okay, now let's look at the structure of xylem. Like for example, we take an example of our home. That our home, at the top of the roof there is a tanky that is completely filled with water. And from that tanky there is pipeline that spreads throughout the whole house, in kitchen, in garage, in toilets, and in other parts also. Tanky, so the pipeline, it transports
the water. Similarly, in case of plants, the tanky or the storage for water is soil. And xylem vessel is the tubular structure. Xylem vessel is that tubular structure that transports the water and dissolved ions from the soil, then to roots, then to leaves, and all other parts of the plants. The important part of xylem is that it lacks cytoplasm and it lacks nucleus. It has both, because so that more space is available for the transportation of water and ions. Xylem is made up of dead cells that are deposited with lignin. Dead cells that are deposited with lignin, lignified walls. Why? So that water can be easily transported throughout the life in xylem vessel. Xylem transports the water in the upward direction, means from soil to upper part of the plant, from soil to upper part of. Moreover, xylem vessel also provides mechanical support to the plant, so that plant and strong stem and strong plant has anchored the soil. So this is all about xylem. Transports water and dissolved ions from roots to leaves and other parts of the plants. Wall is made up of dead cells and is deposited with lignin, and the transportation of water and ions is only in the upward direction. It also provides mechanical support to the plant. Now, here we have to prove experimentally that water and dissolved ions are transported in the upward direction by xylem vessel. So first of all, we take a plant, just a balsam plant, common balsam plant, and we place it in water, and in water we added dilute red ink. We added red ink. And now then we kept this for long period of time. After some time, when we will cut the stem or twigs of the balsam plant, we will see that red fluid, red ink will be transporting in stem and will be transporting in leaf. So that is why we can see that xylem is transporting water from the roots to upper parts of the plant. Now this is all the experiment. Now let's move to phloem. Phloem is the second important structure that we discussed previously, that it is involved in the translocation of sugars and amino acids. Sugars and amino acids. Okay. Now, in xylem, I use the word transportation. Here you can see that the word transport of water is used. But in phloem, I use the word translocation. So transportation in xylem, why? Because water has to come from outside the plant to inside the plant. So when something is coming in plant from outside to inside, we will use the word transport. And when something is just moved from one place of the plant to other place of the plant and its location is just changed, then we will use the word translocation. Like for example, in photosynthesis, glucose is manufactured inside the leaves. Now this glucose is transported to fruit, from leaf to fruit. So just location is changed. So we'll use the word translocation. Or leaf to flower for making nectar. So we will use the word translocation. So this is about phloem. Phloem is made up of sieve tubes and companion cells. Like xylem was made up of tubular structures, phloem is also made up of this sieve tube, this sieve tube, this sieve tube,
and this sieve tubes and so on. And this surrounded by this companion cell, this companion cell, this companion cell. So sieve tubes are surrounded by companion cells. Okay, sieve tubes ensure that sucrose and amino acids, they are moving both in upward and downward direction. And for the translocation of these substances, both in upward and downward direction, we know that energy is required. So, the yes, outside the sieve tubes, the companion cells, so this energy is provided by companion cells. So, these are sieve tubes that are translocating sugars and amino acids, and outside them are companion cells. And these companion cells are providing energy for the upward and downward movement of sucrose and amino acids. Okay, so we have discussed that it is translocation. Okay, now very important part is source and sink. Like for example, photosynthesis happened and glucose is manufactured inside the leaf. So leaf is source. Now from this leaf, glucose has transported to fruit. That's why we feel sweetness in fruit. And then it is this glucose is transported to flower, is transported to flower. So where this glucose is being transported, this is called as sink. So source from where glucose is being translocated, and fruit, flower or any other part where this glucose is translocated, it is called as sink. Okay, always we have to keep it in mind that this translocation occurs of glucose occurs in the form of sucrose. Like when photosynthesis happen, the sugar formed is glucose. This is sugar formed. The sugar stored is starch, and sugar translocated is sucrose. Okay, so these terminologies we have to keep it in mind. Now let's compare xylem and phloem. Xylem is present on the inner side of stem and root. Phloem is present on the outer side of stem and root. Xylem transports water and ions and salts only in upward direction. Phloem transports sugars, amino acids in upward direction as well as in downward direction. Xylem movement does not require energy. Phloem movement requires energy. Xylem does not have cytoplasm. Phloem has cytoplasm. Xylem walls are thick. Phloem walls are thin. Xylem has a wider diameter. Phloem has a narrow diameter. Okay, so this is all about the comparison between xylem and phloem. Now we have to prove experimentally that phloem translocates sugars in the sucrose and amino acids, and it is present in the outer side. So for example, what we will do, we will take a plant stem. For example, this is a plant stem. Above that there is leaf, there is leaf, there is leaf. So we will see that on the stem of the plant there are aphids, insects sitting, small insects here, 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 here. And aphids, we know that aphids are sucking insects. Are so when they are sitting on the stem, so in stem we have read that phloem is present on the outer side. So they pinch their proboscis inside the plant and then start sucking sucrose.
So what that's why they are present here. So what we do, we spray insecticide on aphids. Like we have mortine at home. Mortine is also an insecticide that is used to kill mosquitoes, cockroaches, etc. So we can spray any insecticide on the plant, and on the plant what happens that these insecticide will paralyze all the aphids. देन वी विल कट द प्रोबोस्किस. प्रोबोस्किस कहते हैं चोंच को, कीड़े की चोंच को, इंसेक्ट की चोंच को, उसको हम काटेंगे. एंड देन वी विल ड्रेन आउट ऑल द फ्लूइड फ्रॉम इट. उसके अंदर जितना भी फ्लूइड होगा ना वो हम बाहर निकाल लेंगे. और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे उस फ्लूइड पे जो पेट्री डिश पे हमने इकट्ठा किया. स्टार्च का टेस्ट, प्रोटीन का टेस्ट, फैट्स का टेस्ट, शुगर्स का टेस्ट. तो हम देखेंगे कि जो शुगर्स का टेस्ट है वो पॉजिटिव आ जाएगा, और जो अमाइनो एसिड्स का टेस्ट है वो भी पॉजिटिव आ जाएगा. हेंस इट प्रूव दैट कि जो एफिड्स हैं वो जो स्टेम के ऊपर बैठ के जूस सक कर रहे थे, उसके अंदर जो फ्लोएम ट्रांसलोकेट कर रहा था उसके अंदर सुक्रोज भी है, अमाइनो एसिड्स भी है. Hence prove that phloem is involved in the translocation of sugars and amino acids both in upward and downward direction. Now this part has also come in the previous part of the past papers, that for example how water enters into the root. This is a root. So we know that root has large number of root hairs. You can see these root hairs. So I have drawn one root hair cell. This is a root hair cell. Okay, so this is a root hair cell. So what happens that in this root hair cell, through cell membrane, water is absorbed, nitrates are absorbed, and other substances are absorbed. Water is absorbed through osmosis, and ions are absorbed by active transport. So we have discussed this in movement chapter also. Water will be absorbed by osmosis, and ions or salts will be absorbed by active transport. And all this absorption will occur through cell membrane of a root hair cell. Cell membrane of root hair cell. Okay, now what are the factors that are involved in moving the water against gravity? Okay, dear students, imagine a plant. It is 100 feet tall or 150 feet tall. So from how water is going to be transported from soil to 100 feet up, 150 feet up, 200 feet up. So the plant requires a very strong force to move against the gravity. And the first force is root pressure. When there is lack of water inside the plant, roots they create a pressure, and this pressure will suck water inside the roots. Suck the water inside roots. Then transpiration pull. What is happening that every plant, either it is 100 feet tall or 1 feet tall, its leaves are doing transpiration. That water is being coming out from the leaves in the form of vapors. Water is coming out in the form of vapors. So since water has to move out, so it creates a pull, transpiration pull, so that roots suck more water, so that plant can continue its process of transpiration. So this is called transpiration pull. The pull, the force, the power
that is bringing the water from in the upward direction towards the leaves for transpiration. And the third one is capillary action. The diameter of the xylem vessel is very narrow, so even less amount of water will move fast. If the xylem of water would have been wider, then water movement in the upward direction would have been very slow. Now the water movement is fast. Why this water movement is fast? Because the diameter of xylem vessel is small. So all these three factors, root pressure, transpiration pull and capillary action, together they move the water in the upward direction against the force of gravity. Now what is transpiration? Transpiration is the loss of water in the form of vapors. कभी आप लोग दोपहर को सख्त गर्मियों में दरख्त की छांव के नीचे बैठें तो हमें लगेगा कि वो दरख्त की छांव बहुत ज़्यादा ठंडी है। उसकी वजह क्या होती है कि जितने भी लीव्स होते हैं ना, जितने पत्ते होते हैं, वो सारे के सारे जो है ना वाटर वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकाल रहे होते हैं। वो होती है ट्रांसपायरेशन थ्रू स्टोमेटा ऑफ द लीव्स। हर लीव के अंदर क्या है? बेतहाशा स्टोमाटा। उन स्टोमाटा ऑफ लीव्स से क्या होता है कि जो वाटर होते हैं ना, वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स बाहर आते रहते हैं। वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। इस वजह से जब हम गर्मियों में दरख्त की छाँव के नीचे बैठते हैं तो हमें ठंडक फील होती है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, और मेनली थ्रू स्टोमाटा होती है। थोड़ी बहुत थ्रू लेंटिसेल्स ऑफ द स्टेम में भी होती है। स्टेम के अंदर जो छोटे छोटे सुराख होते हैं उनको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स ऑफ स्टेम। लेंटिसेल्स ऑफ स्टेम यहाँ से भी थोड़े, और थोड़े थोड़े रूट हेयर्स, ऐसे रूट हेयर्स में भी पोर्स होती हैं। पोर्स इन रूट हेयर्स, इन पोर्स की वजह से भी वाटर बाहर निकलता है। अब ट्रांसपायरेशन होती कैसे? सबसे पहले फोटोसिंथेसिस हुई। आफ्टर फोटोसिंथेसिस वाटर इज फॉर्म्ड in all the major parts of the leaf, palisade mesophyll cell and spongy mesophyll cell. Palisade mesophyll cell plus spongy mesophyll cell, इन दोनों पार्ट्स के अंदर जो है वो वाटर की थिन फिल्म बनी। वाटर बाहर आया और आके ऐसे छोटी सी फिल्म ऐसे करके आप देख रहे हैं, ये बाहर आके वाटर लग गया। उसके बाद वाटर फिर एयर स्पेसेस में आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। और जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है, आउटसाइड इज हॉट इनसाइड इज कोल्ड, आउटसाइड इज ड्राई इनसाइड इज वेट, सो थ्रू डिफ्यूजन दिस वाटर मूव्स आउट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पैलिसेड मेसोफिल सेल, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल से बाहर आएगा, ये फिल्म बना रहा है, थिन फिल्म ऑफ वाटर, मॉइस्चर की बाहर आके टिश्यूज के ऊपर बन गई। देन एयर स्पेसेस, ये जो एयर स्पेसेस हैं, इन एयर स्पेसेस के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं उनके अंदर आती है और फिर एरो से बाहर आ जाती है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं दैट अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन? और खुद सोचिए, अगर बाहर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, बाहर पहले ही वाटर वेपर्स एयर में बहुत ज़्यादा है, तो इनसाइड द लीफ और आउटसाइड द लीफ लेस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है ना वो बनेगा। क्या बनेगा? लेस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और इस लेस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा? छोटे कॉन्सेंट्रेशन, कम वाटर बाहर आएगा। सो देयर वुड बी, व्हेन द ह्यूमिडिटी इज हाई, ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, and humidity is high, transpiration is low. Okay, when wind is high, so it blows away the moisture around outside the leaf, blows away the moisture outside the leaf. It blows away the moisture outside the leaf. तो outside क्या हो जाता है? dry. Inside there are a lot of water vapors. So concentration gradient established and rate of transpiration will increase. So rate of transpiration is directly
proportional to wind. When wind is high, rate of transpiration is high. When wind is low, rate of transpiration is low. But it does not happen in thunderstorms. Thunderstorms are exceptions. However, in case of light, when there is light, point number one, more photosynthesis, more water is formed. More photosynthesis, more water is formed. So, more transpiration. Secondly, when there is light, stomata will be open. Stomata open. And when there is dark stomata, they are closed. So, light is also directly proportional to rate of transpiration. More light, more rate of transpiration. Less light, less rate of transpiration. Similarly, temperature. Temperature also makes the air dry. अब जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ हर चीज़ ड्राई होगी तो क्या होगा कि when the outside of the air is dry, so inside there are more water vapors, so concentration gradient is established. So rate of diffusion transpiration will become fast. So temperature is also directly proportional to the rate of transpiration. And the last one is surface area. More the surface area, more the stomata, more the transpiration. Lesser the surface area, lesser the stomata number, and lesser the rate of transpiration. So this is surface area is also directly proportional to the rate of transpiration. Now wilting. इफ़ वी टॉक इन सिंपल वर्ड्स, अगर हम आसान अल्फाज से बात करें तो विल्टिंग क्या होता है? पत्ते का मुरझा जाना. पत्ता कब मुरझाता है? जब हम उसको पानी नहीं देते, जब उसके पास पानी नहीं होती. तो व्हाट डज दिस मीन? हाउ विल्टिंग हैपन्स? व्हेन इट इज द लॉस ऑफ रिजिडिटी ऑफ लीव्स ड्यू टू lack of water. Now for example, in wilting what happens? That the rate of loss of water, how? Loss of water through transpiration. Loss of water is more than absorption of water. Loss of water क्या ज़्यादा हो रहा है, क्या होगा कि leaf they will become flaccid and ultimately leaf will wilt. Other environmental factors that cause wilting, very important, is very high temperature. टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, इससे भी विल्टिंग होगी. वेरी हाई विंड स्पीड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लैक ऑफ वाटर. Okay, what are the advantages of wilting? For example, this is a normal leaf and full sunlight is falling on it. And when there is sunlight, there is maximum transpiration. Okay, now let's look. In wilting, what happens? That the leaf will become wilt. Now, the leaf has been less exposed to light. Leaf has been less exposed to light. So what happened? Less photosynthesis, less transpiration. So in this way, प्लांट क्या करता है कि अपना जो वाटर लॉस है ना, विल्टिंग में जाके ना उसको वक्ती तौर पर रोक लेता है और वेट करता है कि अगर उसको दोबारा पानी मिल जाए, दोबारा सूटेबल कंडीशंस मिल जाए तो वो दोबारा से टर्चिड हो जाए, दोबारा से नॉर्मल हो जाए. लेकिन अगर काफ़ी देर तक, काफ़ी अरसे तक पानी नहीं उसको मिलता तो वो फिर क्या होता है? परमानेंटली विल्टिंग में चला जाता है. और डिसएडवांटेज यही है विल्टिंग का कि व्हेन देयर विल लाइट विल नॉट फॉल ऑन टू द लीफ, देयर विल बी लैक ऑफ transpiration and ultimately there is would be lack of photosynthesis. तो प्लांट में फूड कम बनेगा, फूड प्लांट की ग्रोथ कम होगी. Now how we have to show that phloem carry materials from leaves to other parts of the plant?
ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एक प्लांट लिया, उसके अंदर इतना गहरा कट लगाया कि जाइलम भी कट गया, फ्लोएम भी कट गया। उसमें हम देखेंगे वो वाली ट्विग जो है ना विल्ट कर जाएगी, क्योंकि ना वाटर जा रहा है, ना शुगर और ट्रांसपोर्टेशन जा रही है। लेकिन एक के अंदर हमने कट जो है ना वो लेस डीप कट जो है ना हमने लगाया, और लेस डीप कट से क्या हुआ कि फ्लोइंग अभी था और शुगर्स और अमाइनो एसिड्स की ट्रांसपोर्टेशन चल रही थी। ठीक है। अब उससे क्या हुआ कि वो वाला जो ट्विग होगा इट विल रिमेन हेल्थी। तो जब हम मोर डीप कट लगाएंगे, जाइलम भी काट दिया और फ्लोएम भी काट दिया, तो फिर क्या होगा, लीफ प्लांट विल डाई, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का सारा सिस्टम ही खत्म हो गया। और जब हम स्टेम में एक छोटा सा कट लगाएंगे कि फ्लोइंग भी अभी कुछ इंटैक्ट है, तो फिर ग्रोथ ज़्यादा बेहतर हो। अब हमने ये प्रूव करना है दैट ट्रांसपिरेशन मेनली अकर थ्रू लीव्स। अब हमने जार ए लिया और इसको कंट्रोल ले लिया, जार बी ले लिया, और इन दोनों को हमने ब्राइट सनलाइट के अंदर रख दिया। अच्छा जी, यहाँ पे एक पूरा लीफ रख दिए, ऊपर ग्लास ऐसे ऐड कर दिए ऑयल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑयल? ऑयल जो है ना ये वाटर की सरफेस पे हमने इस वजह से गिराया टू प्रिवेंट इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को रोकने के लिए। अब क्या होता है, एवेपोरेशन को रोकने के लिए हमने ऑयल गिराया। अब थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि अंदर साइड के ऊपर यहाँ पे जार ए में हमें वाटर वेपर्स नजर आएंगे। वी विल ऑब्जर्व वाटर वेपर्स, लेकिन इन जार हेयर नो वाटर वेपर्स, यहाँ पर वाटर वेपर्स होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि देयर आर लीव्स। लीव्स आर मेनली, लीव्स भी हैं, वाटर भी है, so transpiration is happening. Here there are no leaves, no transpiration. अच्छा, हमने क्या किया है कि जो स्टेम होता है ना उनकी उनकी ट्विग्स के ऊपर हमने पेट्रोलियम जेली भी लगा दी, ताकि जो लेंटिसेल्स ऑफ द स्टेम है उनसे जो ट्रांसपायरेशन होती है वो भी ना हो। Now we have to prove that more transpiration occurs through upper part of the leaf and less transpiration occurs through lower part of the leaf. अब हम क्या करते हैं, हम फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, ये प्लांट के साथ लीफ लगा हुआ। अब क्या होता है कि लीफ के अपर और लोअर साइड के ऊपर हम ऊपर वाली साइड के ऊपर भी ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगा देते हैं, दैट इज ऑन द अपर साइड, दैट इज ऑन द लोअर साइड। यहाँ ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगा देते हैं। अब जब ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर हम ऊपर भी लगाते हैं नीचे भी लगाते हैं, तो हम देखेंगे कि जो नीचे वाला पोर्शन है ना वो जल्दी पिंक हो जाएगा, मोर पिंक, और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो लेस पिंक। ठीक हो गया, मोर पिंक लेस पिंक। उसकी वजह क्या है कि जब वाटर ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्ट करता है तो ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर पिंक हो जाता है। अब लोअर सरफेस वाला ज्यादा पिंक हुआ, ऊपर सरफेस वाला कम पिंक हुआ, हेंस प्रूव्स दैट मोर स्टोमाटा आर ऑन लोअर साइड ऑफ द लीफ thus more transpiration on lower side, लोअर साइड पर ट्रांसपायरेशन भी ज्यादा। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, हाउ कैन वी मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। सेम एक्सपेरिमेंट है, हमने इस सारे एक्सपेरिमेंट को, एक हमने स्प्रिंग बैलेंस लिया, उसके साथ हमने हैंग कर दिया टेस्ट ट्यूब को जिसमें वाटर था, एक प्लांट था और बॉइलिंग ट्यूब थी, और सपोज जो स्प्रिंग बैलेंस पे रीडिंग आ रही थी वो आ रही थी 50 ग्राम, रीडिंग आ रही थी वो आ रही थी 50 ग्राम।
अब हमने इसको रख दिया ब्राइट सनलाइट में फॉर 1 आवर। तो हमने देखा 1 घंटे के बाद रीडिंग आ गई 40 ग्राम पे। इसका मतलब है 10 ग्राम वाटर लॉस्ट हो गया ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। उसके बाद हम दोबारा से 50 ग्राम तक पानी और ऐड करते हैं और 50 ग्राम तक इसको फिल कर देते हैं और फिर हम क्या करते हैं, इसको हम रख देते हैं डार्क में फॉर 1 आवर। तो फिर हम देखेंगे इसका जो वेट हुआ वो सिर्फ 48 ग्राम पे आया। इसका मतलब है कि when there was sunlight there was more transpiration, and then when there was darkness there was less transpiration. Hence prove that uh, we can measure the rate of transpiration through different environmental factors. Or the last one experiment is potometer. Potometer experiment is also very important. पोटोमीटर में क्या होता है कि हमारे पास एक स्केल है। स्केल पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी तक रीडिंग आ रही है 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, इस सारे को वाटर से फिल कर देते हैं और ये जो वाटर रिजर्वायर है इसको भी हम वाटर से फिल कर देते हैं और ऊपर हम एक प्लांट लगा देते हैं और ऐसे करके शूट डिप कर देते हैं। अब क्या होता है, अब हमने इसको फिर से सनलाइट में रखा। अब लीव्स में से ट्रांसपेरेशन हो रही है तो वाटर बी से चलता 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 यहाँ आ गया 2 घंटे में फॉर एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल अब हमें पता लग गया कि सन के अंदर जो लॉस ऑफ वाटर है वो ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, टैप को ओपन करेंगे और दोबारा से वाटर को बी तक ले जाएंगे और अब हम दोबारा से एक्सपेरिमेंट करेंगे डार्क के अंदर, अंधेरे के अंदर। तो अब हमने देखा डार्क में तो बिल्कुल थोड़ा सा मूव किया है। तो इस तरह से हम वी कैन मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, वी कैन कंपेयर द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन थ्रू पोटोमीटर एक्सपेरिमेंट। फैन लगा के ज़्यादा विंड वेलोसिटी में वी कैन चेक द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। विदाउट फैन हम जो है ना चेक कर सकते हैं रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन वगैरह वगैरह। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स and many best wishes dear students for your exams and for your preparation. This is your teacher Hamza Fayyaz. Take care of yourself. Allah Hafiz.